Welcome to episode number 3, Intra-Uterine Death. Now we're going to discuss every single detail about intra-uterine death so that any MCQs coming about it, you won't get it wrong. Trust me. We are going to discuss everything like what are the causes, what is the most common cause, what is the diagnosis, and the most important question of the examiner, that what if this happens, a pregnant female UPT positive comes and this happens, and what is the next best step. So this is what are the ultrasound findings, what are the complications, how we're going to manage, and what are the indications for what like for C-sections and everything we're going to discuss. But before that, we have to understand certain terminologies, and this is what we are going to do. So please highlight these points. What I've already told you, that the normal pregnancy have to be 40 weeks, 280 days, 9 months plus 7 days. This is what I've originally told you. ठीक है, इतना pregnancy का period होता है. Preterm pregnancy means anything that happens term से पहले. So term is actually known as एक reference range ले लेते हैं हम. ठीक है, हम majority 37 to 42 को ना एक टर्म ले लेते हैं. मोस्टली हम कहते हैं कि 40 के बाद हुआ तो फिर पोस्ट हो जाता है ना, आपके पास पोस्ट डेटिज्म होती है कि डेट से बाहर हो गया. बट एक रेंज ले ली हमने. अगर 37 से पहले कभी भी बेबी बॉर्न होता है, दैट इज नोन एज प्री टर्म बेबी. ठीक है, टर्म से पहले हुआ. टर्म प्रेगनेंसी एक्चुअली मीन्स 37 वीक्स टू 41 वीक्स प्लस 6 डेज. अल्टीमेटली 42 कहने का एक बहाना है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वे. Term pregnancy is now divided into 3 terms: early term, full term, late term. Full term, early term वही है 37 weeks plus 38 weeks plus 6 days. Full term is 39 weeks plus 40 weeks plus 6 days. Late term is 41 weeks to 41 weeks plus 6 days. You have to remember it. I am really sorry for that. Post term pregnancy basically means that एक term के बाद हो. तो मैंने एक range बता दी थी, 42 तक या 42. अब ये रिमेंबर करना, 42 के बाद ही 42 तक भी it's gonna be post term. ठीक है, that is 294. Please remember the days. Normally it's 284. Abortion. Now please understand these words and remember them. Every country have their own date and own number of weeks of viability and abortion and everything. But according to the recent guidelines जो हम follow करते हैं in India and Asian countries, it is ACOG के accordingly and WHO के accordingly. So right now it is abortion means that any birth or any death, ठीक है, before 20 weeks. Pregnancy loss, not birth, sorry. Pregnancy loss before 20 weeks is known as abortion, while intrauterine death is also known as stillbirth, and if it happens after 20 weeks. So for example, if the baby dies in the womb of a mother after 20 weeks, it is known for whatever the reason. It is known as stillbirth or intrauterine death. Otherwise, before 20 weeks, it is abortion. So please remember these two terms. ठीक है, अब हम आ जाते हैं intrauterine death पर. This is the most important thing and please remember that. Already I have told you कि intrauterine death is equals to stillbirth हमारे country में, Asian countries में, because according to the ACOG, UK countries में also. But WHO have certain problems. WHO have a different definition. It says intrauterine death हम तब बोलेंगे जब pregnancy loss होगा, जब fetal का weight 500 से ग्राम से ज़्यादा होगा. हाँ, I don't believe it, so I'm not going to follow it. Mostly questions ACOG में आते हैं. Until unless WHO का नाम लिया हुआ है तभी मैं इस definition को follow करूँगी. Otherwise if not mentioned, ACOG guidelines ही मानेंगे. बात खत्म. ठीक है, एक्स्ट्रा याद करना है तो कर लो. स्टिल बर्थ और इंट्रायूटेराइन डेथ अकॉर्डिंग टू WHO इक्वल नहीं है, क्योंकि WHO को बहुत ओवर होने की आदत है. तो इट सेज कि प्रेगनेंसी लॉस आफ्टर और इक्वल टू 28 वीक्स, उसको हम लोग स्टिल बर्थ कहेंगे. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंट्रायूटेराइन डेथ? कि अम्मा के पेट, मतलब किसी की भी प्रेगनेंसी लॉस क्यों होती है, तो दैट इज बेसिकली मोस्ट कॉमन है कि हमें नहीं पता. सीधी बात, नो बकवास, वी डू नॉट नो, बात खत्म. लेकिन ज़्यादा एग्जामिनर ने फोर्स कर लिया, ऑप्शंस थोड़े डिटेल मांग लिए, तो अनरिकग्नाइज इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, दैट मीन्स के बेबी वॉज नॉट ग्रोइंग इनसाइड, there was growth retardation inside the baby's uterus. ठीक है, now we are going to identify that basically. Now please, before that, just follow my lead and just listen to my words. For example, close your eyes and imagine that there is a patient of yours, she's coming to you and she's saying कि डॉक्टर साहब, she's pregnant, इसके antenatal visits 4-5 हो चुकी हैं. Now she coming to you at 28 weeks of pregnancy and she's saying कि कुछ टाइम से I am not feeling the fetal movements. भाई साहब, अच्छा fetal movements you can feel at what age of baby? तो telling you guys
फीटल मूवमेंट जब हमें फील होती है ना, उसको क्विकनिंग कहते हैं। लाइक तो क्विकनिंग कैन बी फेल्ट अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो 18 to 20 वीक्स में, और मल्टी ग्रेविडा है तो 16 to 18 वीक्स में ऑफ प्रेगनेंसी। Now she's 28 weeks pregnant and she's saying कि cardiac activity मतलब मुझे ना fetal movements are not felt. Now please, being an intern, I have been an intern gynae and obs के department में, and trust me, it is so irritating for us because so many patients come to us, the load is in the government hospital is higher. Do not, after irritation and after a certain level, you start telling the patient that नहीं आप गलत हो या आप ऐसी complain कर रहे हो to get the attention. But please, if somebody is coming to you with the complaint that fetal activity मुझे कम लग रही है, do not ignore that. It is the most important thing that you diagnose them and you correct them. So if, for example, the patient is coming to you for this about this complaint, but before 32 weeks, what is the first step? 32 वीक से पहले आ रही है अगर भाई साहब, तो यू आर गोना गेट द अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवाओगे कि है या नहीं। अगर 32 वीक्स के बाद आ रही है और 32 वीक्स तक आ रही है तो यू आर गोना गो फॉर द मॉडिफाइड बायोफिजिकल स्कोर और स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, ये मैं इसके एनएसटी के बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगी। ठीक है, अब ये बात होगी, इसको ना वट एवर जो नेक्स्ट स्टेप चीज़ें होती है ना, प्लीज़ मेक अ टेबल फॉर दैट सो दैट पेपर में याद रहे। अच्छा, नाउ आई एम गोना टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स के। फॉर एग्जांपल, अब एक पेशेंट आई थी 28 वीक्स वाली, वही सिचुएशन में, एंड आई ऑर्डर्ड, एंड एज एन इंटर्न आई वाज इंटेलिजेंट, मैं पढ़ी लिखी थी, तो आई वेंट फॉर एन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में व्हाट विल बी द फाइंडिंग्स, जैसे कंफर्म हो जाए, दैट पीजी भी इंप्रेस हो जाए कि यार बंदी ने डायग्नोस कर लिया, तो व्हाट विल बी द डायग्नोस्टिक थिंग्स। The first sign to appear will be the Robert sign. Robert sign means that there will be bubble in vessels. So for example, Robert sign is the first sign and bubbles in great vessels of fetus. बात खत्म। दूसरी जो बहुत एविडेंट होती है और जो इस अल्ट्रासाउंड में एविडेंट होनी चाहिए, प्लीज 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 फोकस ऑन दिस थिंग। कैन यू सी कि ये और कैन यू सी ये दो बोन्स आपस में कोलैप्स हो रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज एक्चुअली फीटल स्कल। ठीक है, लेट मी गिव द गुड ओवरव्यू टू यू। फीटल स्कल, ओके। फीटल स्कल की जो बोन्स होती है ना, वो इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं आफ्टर डेथ ऑफ अ बेबी इन अ वूम दैट दे एक्चुअली गो फॉर स्पाल्डिंग, ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन्स हो जाती हैं, एंड दैट इज नोन एज अ स्पाल्डिंग साइन। ओके, नाउ वी हैव अनदर साइन व्हिच इज नोन एज बॉल साइन। बॉल साइन क्या होता है? इफ फॉर एग्जांपल आई हैव for example, if it's a baby I have in my hand, oh god, I do not have any baby right now in my hand. For example, I have this pen, ठीक है ना, I'll example take it as a baby. इतना हाइपर एक्सटेंशन हो जाए कि बेबी पूरा स्पाइन उसकी हो जाए फीटल स्पाइन, या इतना हाइपर फ्लेक्शन हो जाए कि बेबी की पूरी फीटल स्पाइन की हाइपर फ्लेक्शन हो जाए, ऐसे। ठीक है, तो पूरा बेबी सर्कल बन जाएगा ऐसे, लाइक दिस, पूरी हाइपर फ्लेक्शन से और पूरी हाइपर फ्लेक्शन से, पूरी मेरी पिन खत्म। Then we have crowding of ribs, that's it. Then you have absence of cardiac activity, the most important thing. Cardiac activity, just for your revision guys, when are you going to see the cardiac activity? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ऐसे ऐसे रिविजन करते जाओ, तभी याद होगा। सोचो and please tell me in the comment box. I'll be correcting it if you are wrong. Then you have your important thing, for example, if the patient comes to you, तो ये ultrasound findings हो गई, very good, we are done here. Amniotic fluid कैसे होगा? Amniotic fluid will be tobacco colored, ठीक है, tobacco juice colored होगा। बात खत्म। नाउ वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या चीज़ होगी, मैनेज कैसे करूँगी। देखो, what is my priority here कि somebody comes to me and I have diagnosed them with intra-uterine death, the next step I'm going to do, first step was to order an ultrasound or to go for the biophysical score or NST according to the weeks. I have done the next step, that is ultrasound. The next step after identifying that it is intra-uterine death, the next step would be to give mother the choice. I'm going to give mother the choice that, see, the preferred choice is कि मुझे डिलीवरी वेजाइनल ही करवानी है। What happens, हमारी नेचुरल बॉडी में क्या होता है, that if the fetus is dead inside the mother's body, तो नेचुरल इंस्टिंक्ट इज कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड वो खुद डेड बॉडी को निकालने और दफा करने में बहुत वो फास्ट होती है बॉडी। They themselves, the body knows कि now this fetus is dead and it is of no use, it will in fact produce certain complications, so I'm gonna expel it out. तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं, बट दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कितने वीक्स में बॉडी को अकल आती है कि आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस फीटस। अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम गोना गिव मदर द चॉइस, चाहिए तो मुझे वेजाइनली डिलीवरी, ठीक है, दिस इज द प्रेफर। नाउ क्वेश्चन आस्कना कि व्हाट इज द मैनेजमेंट में मोड ऑफ डिलीवरी, आई वांट वेजाइनल, ठीक है, बट डिपेंड्स ऑन कि आई एम गोना गिव द मदर द चॉइस कि भाई डू यू वांट इंडक्शन, कि मैं इंड्यूस कराऊँ लेबर, या डू यू वांट
spontaneous. Why? Because see, dead fetus in a womb, it is so traumatizing for a mother. Okay, just to think about it, it gives you goosebumps, right? And just chills down my spine that like it's so bad thing. So certain mothers take anxiety, and for that purpose we have to, they say that get rid of the dead fetus. For that purpose we have to go for the induction of labor. Now there are certain conditions when you have to go for the C-section in these conditions. So there are certain conditions in which we are about, and we should always go for C-sections. And going for vaginal is not a good option. Why? These conditions are, for example that this is a baby, okay, and he is lying in a transfer section. No matter how much uterine contractions are good, how much the body is wanting to get rid out of the dead fetus out of your body, it cannot come out, right? So transfers like, for example, CPD is always cephalopelvic disproportionate. That means the obstructed labor. We are going to discuss it later in the later episodes of labor. In that condition, for example, placenta previa, she was a known case of placenta previa, a case where placenta is low lying and वो opening, जो uterus की opening होती है ना cervix vaginal की, वहाँ पे आपके पास placenta is lying. So that means all the blood vessels are over there. So your attempt for vaginal will be dangerous even. ठीक है? There are other conditions, for example, the patient have already gone through C-sections, exactly like 2 or greater than 2. Agar past mein she have a history of 1 C-section, so it is possible for us to go and opt for a vaginal spontaneous or induction of labor. But agar 2 C-sections ho chuke hain, so it is advisable to go for the C-sections. Now, for example, she wants to wait for the spontaneous delivery to happen. That means she is willing to wait for at least 1 week, 2 weeks, until the body itself is ready to give the uterine contractions and get rid out of the dead body. So if the wait is exceeding 2 to 3 weeks greater, that means that I as a doctor have to go for the coagulation profile of a patient, because there is a complication which is DIC. Now if, for example, that says that if the fetus is retained for greater than 4 weeks or equals to 4 weeks, there's a chance that वो dead fetus के जो body parts होते हैं और body materials होते हैं, हो सकता है कि body starts making antibodies against that, और हो सकता है कि they start activation of the clotting systems, so thrombus बनना start हो जाएंगे and bleeding start हो जाएगी. For that purpose, any diagnosed case of intrauterine death 2 to 3 weeks अगर हो जाते हैं patient को, because she wanted to wait for it, or because unfortunately उसने notice ही नहीं की cardiac activity को, and we find out that okay 2 weeks 3 weeks already हो चुके हैं, so we are actually going to go for the coagulation profile का एक test. That's it. Then whatever you want to do as a surgeon or as a obs and gynae, you can opt for it. So I hope it is clear to you guys. Don't forget to subscribe to my channel and comment down your problems. Thank you so much.